Dear students, do you know why you should master the present indefinite tense? It is just because it is the mostly used tense in English language. Whether we know or not, we use it most of the time in our daily conversation. Now it is time to learn what is present indefinite tense and how to use it correctly. Habits and interests. This tense is also used to talk about what we like, what we dislike, what we want to do, what our ambitions and goals are. This tense is also used to describe an event or in sports commentary, as well as in dialogue narration in any drama or news reporting. Now pay attention to its definition. This tense is also used in describing an event in a sports commentary as well as in drama or dialogue narration and news reporting. ये ज़माना वो बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हम करते हैं, जो हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या मकासद या क्या दिलचस्पियां हैं. This tense is also used in describing an event. ये ज़माना किसी इवेंट को या किसी फंक्शन को भी बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इन स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि ही गोल्स वगैरह वगैरह, एज वेल एज उसके साथ साथ इन ड्रामा और डायलॉग नरेशन, उसके साथ साथ हम इसे ड्रामे या किसी डायलॉग की लिखाई में भी या बोलने में भी हम इस्तेमाल करते हैं. जस्ट लाइक सडनली द विंडो ओपन्स एंड अ मास्क मैन एंटर्स द रूम, इसमें भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा न्यूज़ रिपोर्टिंग, आज कराची में धमाका हुआ है या कहीं पे कुछ भी हुआ है तो उसको भी बयान करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का सहारा लेते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इन ऑर्डर टू सेव टाइम वी हैव ऑलरेडी रिटन सम सिंपल एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जस्ट पे अटेंशन टू देम. आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश ज़बान पढ़ाता हूँ. हिज मदर इज़ अ टीचर, उसकी वालदा एक उस्तानी है. अली लाइक्स प्लेइंग टेनिस, अली टेनिस खेलना पसंद करता है. Here we have used a gerund, playing. You are my best friend, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं. Why don't you like coffee, तुम्हें कॉफ़ी क्यों नहीं पसंद. My father hates smokers, मेरा अब्बू तंबाकू नोशों से नफरत करता है. I hope you won't let me down, ये अब conditional sentence है. This is a conditional sentence in which we have used present indefinite tense. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे. I believe Allah is one, मेरा ईमान है कि अल्लाह एक है. As we have defined present indefinite tense, that we use it to define or to describe repeated actions. We use this tense to describe things we do repeatedly. हम ये ज़माना बार बार दोहराए जाने अफ़आल अफ़ाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. We use adverbs of frequency, हम ताद्दुद या तादाद की फ़ेल इज़ाफ़ती इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफ्टन, seldom, rarely, occasionally, never, etc. Now pay attention to these sentences in which we have used the repeated actions. I wake up daily at 6 a.m. मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ. She always arrives in time, वो हमेशा वक्त पर पहुँचती है. They usually have a walk in the evenings, वो अमूमन शामों में चहलकदमी करते हैं. He often comes late, वो अक्सर देर से आता है. Barking dogs seldom bite, यहाँ पे हमने एक प्रूवर्ब यूज किया है. भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते.